Hi, my dear students, welcome to the English School. This is your teacher, Rupali. Today we are going to read and understand the poem The Snake Trying, written by W.W.E. Ross. This poem is in your class 9th NCERT Beehive. It's a very short poem and it is easy to understand also. In this video lesson, you are going to find line by line explanation of the poem. We'll discuss the difficult word meanings, and in the end, you'll also find the poetic devices used in the poem. So make sure that you watch it till the end. Now, do you think that all the snakes are venomous or poisonous? No. Only 1/4 of the snakes that are out there are poisonous. Rest are non-poisonous. But what happens whenever we see a snake? Just imagine yourself encountering or seeing a snake. We freak out. And when we are so freaked out, we want to get rid of the snake. And in that, we are very harsh on the snake. We call people who try to kill the snake. There is no other way. Yes, so in this poem, the poet is trying to tell us that not all snakes are poisonous, and we need to have an awareness as to which snakes are poisonous and which ones are not poisonous. And we need to handle it accordingly. We need to calm down, chill, and then handle it. Okay, so now let's read the poem. Although the poem is written in one stanza, I'm going to divide it in three in order to make it convenient for you and for me. So stanza 1. The snake trying to escape the pursuing stick with sudden curvings of thin long body. How beautiful and graceful are his shapes. So here the poet is telling us that the snake is trying. अब ये क्या है? ये जो टाइटल में है the snake trying, उसका एक्सप्लेनेशन आप इसे बोल सकते हैं. द स्नेक ट्राइंग क्या ट्राई कर रहा है स्नेक करने के लिए? टू एस्केप द परस्यूइंग स्टिक. परस्यूइंग मीन्स चेजिंग और फॉलोइंग. तो वो एस्केप करने की कोशिश कर रहा है, मतलब बचने की कोशिश कर रहा है. किससे? कोई ह्यूमन जो कि स्टिक लेके उसके पीछे पीछे भाग रहा है. तो परस्यूइंग स्टिक यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग यूज़ है, क्योंकि स्टिक अपने आप तो परस्यू नहीं कर सकती, अपने आप तो चेज़ नहीं कर सकती. तो ऑब्वियसली कोई इंसान उसे स्टिक को लेके स्नेक के पीछे पीछे भाग रहा है, उसे चेज़ कर रहा है. विथ सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी. और स्नेक कैसे चल रहा है? स्नेक अपनी बॉडी को ट्विस्ट एंड टर्न करके चल रहा है, कर्व्स बनाते हुए. एंड अकॉर्डिंग टू द पोएट, वो कर्व्स जो हैं वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं स्नेक के. हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स. जो शेप स्नेक बना रहा है चलते हुए, वो बहुत ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल है अकॉर्डिंग टू द पोएट. तो डिड यू सी हाउ डिफरेंट his approaches towards snakes? Normally snake की बात होती है तो होता है कि हाँ, how dangerous the snake is. Here he is saying the long thin body of the snake is making curves which are very beautiful. Next stanza. He glides through the water away from the stroke. Oh, let him go over the water into the reeds to hide without hurt. Small and green, he is harmless even to children. So now he is saying कि he glides through the water away from the stroke. He कौन है यहाँ? Snake. Glides means moving with the smooth motion. He moves through the water away from the stroke. तो stroke means जो उसे मारने की कोशिश की जा रही है, वो उससे बचने के लिए he glides, he moves through the water. Oh, let him go over the water. And poet जो है वो उस human से plead कर रहा है. He is requesting the human to let the snake go, because snake तो कुछ harm नहीं कर रहा है. The human is just running after the snake, and the poet is saying, oh, let him go over the water into the reeds to hide without hurt. रीड्स आर वाटर और मार्श प्लांट्स विद स्टेम्स. तो ये प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर में ग्रो होते हैं. तो पोएट कह रहे हैं कि द स्नेक जस्ट वांट्स टू हाइड. वो बस छुपना चाहता है, वो किसी को हार्म नहीं कर रहा है. तो डू लेट हिम गो. स्मॉल एंड ग्रीन, ही इज़ हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन.
and he's saying the snake is very small and green in color. तो ये जो snake है ये harmless है, ये किसी को भी harm नहीं कर सकता है. Along the sand he lay until observed and chased away, and now he vanishes in the ripples among the green slim reeds. Along the sand he lay until observed. तो पोएट कह रहे हैं कि वो सैंड में आराम से लेटा हुआ था जब तक उसको किसी ने ऑब्ज़र्व नहीं किया, जब तक किसी ने उसे देख नहीं लिया. तो वो किसी को कुछ हार्म नहीं कर रहा था, वो अपना आराम से बैठा हुआ था जब तक एक ह्यूमन ने उसे देखा नहीं और उसे चेज़ करना स्टार्ट कर दिया, उसे वहाँ से भगाना स्टार्ट कर दिया. एंड नाउ ही वैनिशेस इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स. और अब क्या कर रहा है स्नेक? अब स्नेक कोशिश कर रहा है वैनिश, डिसअपियर, गायब होने की, इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स. रिपल्स आर स्मॉल वेव्स, जो लहरें बन जाती हैं. जब आप कोई स्टोन जैसे अगर पानी में डालते हैं तो उसमें रिंग्स बन जाती हैं, लहरें बन जाती हैं छोटी छोटी, तो वो होते हैं रिपल्स. तो स्नेक उस वाटर में जहाँ पर रिपल्स फॉर्म हो गए हैं वहाँ पर एस्केप करने की कोशिश कर रहा है अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स. वाटर प्लांट्स में कहीं वो छुपने की कोशिश कर रहा है. सो दैट इज़ द पोम. नाउ लेट्स लुक एट द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोम. First of all, we have personification used throughout the poem. Personification क्या होता है? Personification is when you give human characteristics to animals or to inanimate objects. तो यहाँ पर snake जो है वो पूरी poem में he बोल के रेफ़र किया गया है and उसे it नहीं बोला गया है. So that is personification. Another literary device used is alliteration. In the line he is harmless, her sound is being repeated. So that is alliteration. Let's talk about the rhyme scheme. There is no rhyme scheme in the poem, so we can say that the poem is written in free verse. So that was all about the poem. I hope you have understood it well, and if you have, do hit the like button and also subscribe to my channel. Thank you.